Hello students, welcome to the SS Science World, and today we are going to start a new chapter that is from IGCSE book 10th board, and it is chapter number 15, and that is our chapter name is Reproduction in Humans. Okay, so we are going to talk about reproduction in humans and how it's going on and all the processes, reproductive organs, and in this chapter, we will talk about um, structure and function of male and female reproductive system, and also we have to we have to talk about how sperm and egg adapted for their function. So basically, in this chapter, as you already have heard the term reproduction, so first of all, we बेसिकली हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा डेफिनेशन एंड पूरा उसका देखेंगे कि हाउ डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल सो in this chapter we are going to talk about the following terminologies, and these terminologies are the structure and function of male and female reproductive organs. Then we'll talk about how sperms and eggs adapted for their function. Then we will going to talk about how hormones involved in reproduction. Then we will talk about sexually transmitted infection, and then we will talk about the disease that is sexually transmitted disease, which is known as HIV. Okay, so लाइन बाय लाइन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एंड जैसे अगर हम अपना दूसरा वाला देखते हैं 1 मिनट नेक्स्ट स्लाइड जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में we are going to talk about some terms and definitions. Okay, तो टर्म्स एंड डेफिनेशंस हम देखेंगे बट इससे पहले हम मुझे लगता है आप लोगों को ये चीजें एक बार गो थ्रू कर लेनी चाहिए जिससे कि आप लोग ये जान सकें कि जितना भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो हमें देखना है इसमें देन उसके बाद हम लाइन बाय लाइन सारा कुछ देखते जाएंगे. So come to the next slide, and this slide is showing some important terms and definitions. Right? So some important terms and definitions are what? First of all, reproduction. So students, what do you mean by the term reproduction? It is the biological process. It is biological process by which new individual or organism will produce from their parents, and these organisms are termed as offspring. So during reproduction, male gamete fuses with female gamete, and then they will produce an offspring. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पता चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So if we are going to talk about types of reproduction, then we will find the uh, there are two types of reproduction. First of all is sexual reproduction, and second one is asexual reproduction. So during sexual reproduction, only two parents are involved, and during asexual reproduction, only one parent is enough to produce their offspring. That's why human is a complex animal. We all know that, and we should keep this in our mind that if we are going to talk about reproduction in humans, then always and always only sexual reproduction is there, which is found in sexual reproduction is present in human
And asexual reproduction is not present in human because it is studied in lower animals. But as human is a higher animal, and higher animal always shows sexual reproduction, like cow and buffalo or dog, cat, rabbit, and also this rat. Okay, so all of these are what? These are, all are complex animals, and these all showing uh, sexual reproduction, not asexual reproduction. Right? यहाँ तक clear है? So we are going to uh, we are now moving towards Homunculus theory. So first of all, what happened? There was a scientist, okay, a man who is a scientist, and his name was Antony van Leeuwenhoek. In 1654, it's a story in which this scientist take a sample of sperm cells. Okay, so sperm cells are found in males, not in females. So he took some sperm cells, and he was the first person who saw sperm under microscope. He was the first person who observed sperm under microscope. Then uh, he tried to convince other people also that he saw something like means term sperm was not proposed those times. So Antony von Leeuwenhoek was he, he felt some hesitations to talk about the this kind of a structure that is now we are known as, or we are called as, or termed as sperm. Then he just वो चुपचाप से साइड में जाके बैठ गए. उनको लगा कि कोई भी जो है उनके बारे में बिलीव नहीं करेगा. If he uh, is going to talk about such kind of a structure, nobody will believe. ऐसा एंटनी वन लीवेनहॉक को लगा. Then in 1677, his student named John Ham, he was a student of Antony van Leeuwenhoek. तो इन्होंने sperm को एक term दिया that is small animals with tails. He also researched in research lab, and also saw some sperm cells. Then what was happen? वो गए एंटनी वैन लीवेनहॉक के पास कि अरे सर मैंने कुछ देखा है वहां पर कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो टेल्स हैं उनकी, और वो एनिमल्स जो हैं वो मोबिलिटी कर रहे हैं जल्दी जल्दी. तो वो क्या है? एंटनी वैन लीवेनहॉक वाज शॉक्ड, एंड वो बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था. देन many theory emerges, but at the same time John Ham decided that he have to talk about this. Now, one of the most popular theory is Homunculus theory, and that is meaning a tiny human being. तो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी उस टाइम पे आई, दैट इज होमनक्यूलस थ्योरी. एंड इस थ्योरी में क्या हुआ कि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, एंड इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो होमनक्यूलस थ्योरी में क्या हुआ कि जैसे ही जो साइंटिस्ट थे एंटनी वैन लीवेनहॉक, उनको बहुत ही हेजिटेशन फील हुआ. देन उसके बाद जॉन हैम आए, उन्होंने भी उनको चुप कर दिया कि हमें इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी. ठीक है. तो जब तक कोई भी चीज प्रूव नहीं हो जाती उस चीज को हम अच्छे से रिसर्च नहीं कर लेते, अच्छे से हम देख नहीं लेते, हम उसके बारे में बात नहीं करते. क्योंकि साइंस में ऐसा नहीं होता है. साइंस इज बेस्ड अपॉन प्रूफ. तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप इसी तरह से किसी भी तरह से हवा में बात नहीं कर सकते. So one theory which is so much important is homunculus theory. We are going to talk about that.
So what will happen, or what was happened in 1695? Nicholas Hartsocker, one more Dutch physicist, came and draw the picture of homunculus. इन्होंने homunculus की पिक्चर को सबसे पहले ड्रॉ किया था. कौन थे वो? निकोलास हार्टसोकर. तो इन्होंने क्या है इस तरह का स्ट्रक्चर एक बताया, एंड ही सेड दैट ही नेवर सॉ लाइक दिस बिफोर. उन्होंने कभी पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी. नो वन न्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग सेल एट दैट टाइम. So nobody knows that maternal characteristics also get involved in offspring. They think that only पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, और मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मदर की वॉर्म से ही जो है जो भी ऑफस्प्रिंग है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरह की उस टाइम पे थ्योरी मानी जाती थी. बिकॉज एग सेल वॉज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, दैट्स वाई साइंटिस्ट जो है वो थोड़े कंफ्यूज थे और इसके बारे में बात करने से डरते थे. बट जब निकोलस हार्टसुपर ने हिम्मत की और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया हेमिनकुलस थ्योरी. तो इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है. इट्स अ टाइनी ह्यूमन बीइंग लाइक स्ट्रक्चर, टू हैंड्स, लेग्स एंड फेस. एंड ये चीज किसमें है? हेड पार्ट में. और उसके बाद जो है ये टेल पार्ट है. तो मिनिएचर ऑफ एडल्ट रिजाइड इन दिस हेड पार्ट, एंड टेल इज freely moving. तो इस तरह से जो है होम्युनकुलस थ्योरी को इन्होंने ड्रॉ किया. और आफ्टर दैट इन्होंने जो है सबके सामने होम्युनकुलस थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने जो है टर्म दी. और वो जो टर्म थी वो क्या थी कि एक जो मिनिएचर जो है एडल्ट का वो सभी में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑल स्पर्म्स आर कंसिस्टिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ मिनिएचर. ओके. नाउ next thing is human reproductive system. What do you mean by human reproductive system? Come to the point. First of all, we have to know that what is sexual reproduction. So sexual reproduction is what? When the sperm from male parent fertilizes an egg from the female parent. तो ह्यूमनकुलस थ्योरी तक तो हमने देख लिया, तब तक तो उन्हें एग सेल का पता नहीं था. बट एज एग सेल इज डिस्कवर्ड, देन जो डेफिनेशन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो इस तरह से निकल के आई कि जो मेल पेरेंट का जो स्पर्म है वो फ्यूज करेगा फीमेल पेरेंट के एग से एंड प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग. यानी जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे पहले क्या हुआ कि स्पर्म सेल ने फ्यूज किया एग सेल से, एंड देन जो भी बच्चे हैं वो प्रोड्यूस हुए. यानी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी उनके पेरेंट्स से इसी तरह से फ्यूजन के थ्रू ही प्रोड्यूस हुए हैं. Okay, then next term we are going to talk about gametes. So what are gametes? Gametes are reproductive cells. These cells are haploid, which possess information of characters of upcoming offspring. And male gamete is sperm and female gamete is always ovum. और ovum का एक और नाम है जो क्या है? egg cell. Fine. So what do you mean by haploid cells? See, there are two types of cells, haploid and diploid. Haploid cells are found in only sperm cell and egg cell, but diploid cells are found in all the somatic cells. Somatic cells are what? Somatic cells are liver cell and pancreas cell, eye cell, hair cell, each and every body part of cell having two end, diploid kind of cell, and that are known as somatic cell.
और जो sperm cell and egg cell है that are known as germinal cell, and they have only haploid kind of cell, means only half part of chromosome, means total number of chromosomes are what, हमने देखा था 9th standard में, there are 46 number of chromosomes. So in sperm cell and egg cell only half part, means 23 number of chromosomes are present in sperm cells and egg cells. 23 in sperm cell and 23 in egg cell. So this is the basic thing which I am going to let you know. And then come to the next point, which is what? Which is our zygote. So what do you mean by zygote? As male and female gamete fuses, it produces zygote. ऑफस्प्रिंग तो बनेगा, बट ऑफस्प्रिंग जो है पहले किस फॉर्म में होगा, जाइगोट के फॉर्म में होगा, और ये जो जाइगोट होगा, दिस इज डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेल कैसे होगा, हम ये इजीली देख सकते हैं कि एन सेल कम्स फ्रॉम स्पर्म सेल एंड प्लस एन सेल कम्स फ्रॉम एग सेल. स्पर्म और एग से एन एन मिला तो एन प्लस एन इज बिकम टू एन. ओके, तो इस तरह से जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड इट्स अ diploid form of structure after fusion of male and female gametes. So this is our zygote. And zygote जो है 2n होता है, ये भी हमने देख लिया. Now what? Now we are going to talk about what? Yes, next slide is in front of you all. We are going to talk about female reproductive system. So female reproductive system is what? The reproductive system which is found in female. फीमेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सभी आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ड्राइंग. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट एट द एब्डोमेन पार्ट ऑफ द फीमेल्स, एंड this one is oviduct, and another name of oviduct is fallopian tube. So there are two oviduct are present in female reproductive system, and these oviducts, mouth of this oviduct is open into this ovary. So there are two ovaries are present in each female. Now next structure is uterus wall. Uterus is the big bag like structure which is present in the center of the abdomen of a female. Then uterus lining. Uterus wall is surrounded by uterus lining. Okay, so this is known as endometrium wall also, and it is consist of some blood cells and veins. Okay, so जब भी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से यूट्रस लाइनिंग एंड एंडोमेट्रियम जो है फंक्शन करती है. नाउ दिस endometrium and uterus mouth is open into the cervix. So this part is known as cervix. Now this cervix is moving forward and open in the vagina. Okay. So this is the slide which is showing the female reproductive part, and female reproductive part are basically made up of oviduct or fallopian tube, and then ovary, and then uterus, cervix and vagina. Now as we are going to talk about female reproductive system in detail, we will find we will find first of all what we will see, oviducts. Oviducts are two in number either side. मैंने जैसे कि आपको बताया, having ovary each side,
and then it having womb uterus. Other another name is womb. So it is one and present in center, and it is thick walled. It is form of endometrium wall that is muscular, small in sizes and stretchable. यानी कि ये स्ट्रेचेबल होता है, इसका साइज जो है वो लार्ज भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज cervix. Cervix is the base of uterus and known as neck of uterus. It's narrow opening. And then vagina. Vagina is connected with cervix and leading outside of the body. Now, urethra. Urethra comes from bladder and it is present in front of vagina. And rectum is present just behind of vagina. Okay. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊं कि सर्विक्स जो है उसे नेक ऑफ यूट्रस किस तरह कहा जाता है. देखिए, इसमें सर्विक्स वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है. वेयर इज सर्विक्स? दिस इज सर्विक्स. तो cervix is what? Cervix is seems like a neck, so it is also known as a neck part of this female reproductive system. आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है then you can ask me in the comment section. Okay, and you can also join my classes which are going to live, एंड उसका जो भी टाइम होगा, जो भी शेड्यूल होगा, आई विल लेट यू नो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, आपको नोट्स भी अगर इसके चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू. तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ये सारे के सारे लिंक्स देख सकते हैं, और मैंने वहां पर अपनी ईमेल आईडी मैंने लिंक में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में. तो आप वहां पर भी जो है देख सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. और मेरा फेसबुक का जो पेज है उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, जहाँ से आपको इजीली सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी. और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह से आपको सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आप मिस नहीं करोगे. हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो प्रिंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे. बट आपको एक चीज करनी है कि आपको अच्छे से स्टडी करना है. ओके. सो हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जैसे ही आप लोग बताएंगे आपको नोट्स जो है वो कुछ ही ड्यूरेशन में आपको प्रोवाइड करते जाएंगे. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अच्छे से पढ़ाई करिए एंड हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग.